हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू oliveboard. आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है. If we see, most of the banking and government examinations have the same type of exam pattern, especially for the tier 1. So we know we have three sections, which is English, we have reasoning, and we have quantitative aptitude as sections. So it is very important to have an exam attempt strategy in your mind कि आपको पता चलना चाहिए कि which is the order in which you should attempt questions to make sure that you're able to attempt the maximum number of questions. Before we start with the video, don't forget to take up a free mock test provided by oliveboard by clicking on the link given to you in the description box. So do take up a free mock test, analyze your performance and structure your exam preparations accordingly. Subscribe to our YouTube channel for latest videos. So we will start with the first section, which is the English section. So first and foremost, we should remember that our primary goal in the exam is to clear the cutoff for this section, and then we should work on maximizing our scores, because हमको पता है everything in competitive examination works on clearing the cutoff. तो अगर आपने cutoff score क्लियर कर लिया है तो इवन इफ यू स्कोर आउट इट डज नॉट मैटर, स्पेशली फॉर टायर 1, बिकॉज टायर 1 के मार्क्स तो ऐड होते ही नहीं है आपके सिलेक्शन में. सो जब आप एग्जाम में जा रहे हैं, we can either go for the strongest topic first, or we can go for questions like error spotting or fill in the blanks, or we can talk about the miscellaneous questions from vocabulary, synonyms, antonyms, the meanings of idioms, or the correct usage of a word in sentences, or jumbled parts of a sentences, etc. Now क्या होता है ना, why is it that either you should go, why you should go for the strongest topic first or the ones that are very easy? Because अगर आप ये सारे questions attempt करते हैं तो around 15 questions तो आपने attempt कर ही लिए हैं, एंड इसीलिए अराउंड वी नो कि हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन. सो 15 क्वेश्चंस अगर आप क्लियरली अटेम्प्ट कर रहे हो तो इससे ज़्यादा कट ऑफ होने वाला होता ही नहीं है. सो अ मैक्सिमम ऑफ 7 to 9 मिनट्स में आप ये क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे. और जनरली हमने देखा है कि हर एग्जाम में 20 मिनट्स हमको दिया जाता है टू सॉल्व द इंग्लिश सेक्शन. तो अगर आप मैक्सिमम टाइम विच इज 9 मिनट्स में ये इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, which comes up to around 15 questions, so then you are left with only 15 question and you have around 11 minutes to solve them. तो इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे if you start with the easy questions. सो हमारा गोल एग्जाम में यही होता है टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. तो हमको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस, लाइक अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट हम अराउंड 25 क्वेश्चंस सॉल्व करके आए, ताकि एटलीस्ट हमारे 20 to 22 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए और हमारा सिलेक्शन फॉर टायर 2 100% हो. ठीक है, लेकिन जब भी आप इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्टार्ट विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट और पैरा जम्बल्स इन द स्टार्टिंग, बिकॉज इनमें क्या होता है ना, वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम, और हमें पता है कि हमारा टाइम बाउंड एग्जाम है, ये हमारे पास बहुत कम टाइम होता है. तो इनको पढ़ने में और इनको समझने में, एंड देन नोइंग कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो बहुत टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है. एंड समटाइम्स वी नो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आर वेरी टफ टू अंडरस्टैंड. और अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम इन तीन टाइप के क्वेश्चंस में देते हैं, विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स, तो हमारे पास बहुत कम टाइम बच जाएगा एट द एंड टू सॉल्व द इजियर क्वेश्चंस. तो अगर हम in that's why we should always start with the questions that are easy, so we can maximize our number of attempts. Also, अगर आपने reading comprehension पूरा पढ़ लिया but you are unable to conclude or you're unable to come up with answers for the questions जो आपसे reading comprehension में पूछे जाते हैं, you might lose on your confidence for the upcoming sections. इसीलिए जो हमने आपको बोला है कि पहले आप आपके strong areas और easy questions को solve करिए, you should always go along with that. Also, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी. नाउ आपको भी पता है कि
if you have a daily habit of reading a newspaper, or if you're following our daily vocabulary that we publish out every day on our channel, तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका vocabulary बहुत ज़्यादा strong हो जाता है, which will also help you in increasing the number of attempts. तो इस vocabulary के साथ we also give you the synonyms. तो ये सारे questions will definitely help you in maximizing the number of attempts. Talking about the logical reasoning section, तो यहाँ पे भी the topics that you should go with first are topics like syllogism or coding decoding, coded inequalities, ranking, direction sense, alphanumeric series, blood relations. Now ये सारे जो भी questions है reasoning section से, they are very very easy when compared to the tougher ones like puzzles. तो puzzles से हमको कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए, because we know there's no guarantee कि वो puzzle हमसे solve हो पाएगा. Also we know puzzle is very very time consuming, so if you start with these easy questions you will be able to finish these in 7 to 8 minutes, or around आपके 15 questions again will get solved. इसके बाद we can move on to questions like puzzles. So जब आप puzzles भी solve करें, make sure that you start with puzzles that have one variable. For example, only people or things that are arranged in a certain order, which can be linear, vertical, circular or square. And then you should move on to the tougher ones like two variables, जिसमें हमसे पूछते हैं कि there are people also and there is direction also, or there are books and there are some colors which they like, or sports related कुछ. So ये वाले जिनमें two variables होते हैं, they are very very tough, so you should not solve them in the starting. Also कोई easy puzzle होगा, it should not take more than 2 to 3 minutes each, which includes answering the question also. तो आपको बहुत फटाफट ये puzzles related questions को solve करना चाहिए. Talking about the circular arrangement puzzles, these puzzles are very very easy when compared to the other ones. इसमें कभी कभी एक वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी दो वेरिएबल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द लीनियर अरेंजमेंट और स्टैक और फ्लोर और ऑर्डरिंग पजल्स, दे हैव अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ये बहुत टफ हो जाते हैं. तो प्लीज नोट दैट अगर कोई पजल्स है जिसमें ब्लड रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ट्रिकी होते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं. सो इफ आपसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए तो यू सेट अ टाइम लिमिट ऑफ 4 to 5 minutes. तो हमको पता है कि हमारा टाइम हमारे को स्क्रीन पे दिखाते रहते हैं while we are attempting. So make sure the maximum amount that you should give to such question is 5 minutes. और अगर आप 5 minutes में भी इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, अपना ईगो को साइड में रखिए और इस क्वेश्चंस को छोड़ के मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिकॉज हो सकता है आप 10 minutes भी इस क्वेश्चन में लगाएं एंड यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर्स या करेक्ट आंसर्स नहीं दे पा रहे हो, तो आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे. After solving puzzles, first you should start with syllogism and questions, decoding, coding, etc. wale, and then you can move on to the puzzles question, and at the end you can solve the data sufficiency questions. Sometimes they can be easy, but we know they are very time consuming because there are around 2 to 3 conditions that we have to solve in a single question only. तो अगर data sufficiency question आपसे question paper में है तो उसको last में attempt करिए to make sure that you clear the sectional cutoff and you give the maximum number of attempts for the logical reasoning section. Coming to the quantitative aptitude section, तो यहाँ पे जो easy होते हैं जिनको आप 5 to 7 minutes में solve कर पाओगे are questions from simplification, approximation, quadratic equation, sequences, series. तो इन questions को आप priority दीजिए because they take very less time. These are generally based on some formulas जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, and these are very very easy. तो around 10 to 12 questions definitely आप इससे solve कर पाते हो in 5 to 7 minutes, and then you can go on for questions like the data interpretation sets, because अगर कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है उसमें हमको पता है अराउंड 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो cumulatively take lesser time to solve these questions when compared to the miscellaneous topic questions. So start with the very easier ones and then you can go on to the data interpretation ones.
Now, in the data interpretation sets, caselets should be attempted at the end because इसमें क्या होता है ना, they convey information in paragraph form and it gets very difficult to comprehend when compared to the graphs and tables. तो अगर आपसे data interpretation का questions are in the form of caselets तो उनको बाद में करिए, whereas if it is given in the form of tables or if it is given in the form of graph, we know it is very easier to solve these kind of questions. तो इनको आप पहले कर सकते हैं. Now if we know data interpretation से around 10 to 15 questions पूछे जाते हैं क्योंकि around 2 to 3 sets होते हैं in most of the examination. इसीलिए make sure you're giving around 4 to 5 minutes on each set but not more than that. So you start with the easier ones जो आप around 5 to 7 minutes में complete कर सकते हो. Then you can move on to the data interpretation questions जिसमें आप around 10 to 12 minutes लो and then जो और miscellaneous questions हैं आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उस हिसाब से आप उनको अराउंड बाकी के जो 2 से 3 मिनट है उसमें सॉल्व करिए. At the end, you should solve the data sufficiency questions if they are asked you in the examination. Now, how will this strategy help you? So, as I already told you, this will definitely help us in increasing the number of attempts in the real examination. So, if you're attempting in this manner, I'm sure you can attempt more than 75 questions for sure, and the chances of your selection is must. So, try to follow the same strategy when you're taking mock tests too, because mock tests हम क्यों लेते हैं, we take it for our regular practice, and as you practice you develop a sense of your own strategy, or you start knowing what are your strong areas and what are your weak areas, so you can develop your own strategy and you can attempt in that manner only in the real examination. ऑल्सो एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो फेज 1 का एग्जामिनेशन होता है उसके मार्क्स तो इंक्लूड नहीं होते हैं इन द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस. हेंस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आर ओनली एम इज टू क्लियर द कट ऑफ, sectional cutoff also and overall cutoff also. So if you're following this strategy, I am sure that you're going to clear both sectional as well as overall cutoff. That's all we have for you in this video. I hope you like the video. Do share it with your friends who are also preparing for banking and government examinations. And don't forget to subscribe to our YouTube channel for latest videos. Thank you.